Good morning, Aptikansa is HornbillTV la Morning Pulse. Mete Civil Organization Coordinating Committee on Manipur Integrity pra Manipur Governor ge public or civil disobedience campaign so pra boycott kuri dise koikna Saturday din de janai dis. The last statement to all of din age de Manipur State Transport Bus te Manipur la naam nachulaule security forces pra kwa upor sarkar ge maaf mangi bole kane 48 घंटा दिया दो खत्म हुआ pra governor ge boycott kurble faisla do luise koikna kokumi bra janai se. Welcome to the press conference from Kokomi. Following to the expiry of the 48 hours deadline with a general strike set for the governor of Manipur to tender an apology for the outrageous restrictions on the use of the name Manipur on MST buses en route to Ukhrul for the Shiroi Lily Festival on 20th May 2025. The people of Manipur now enters to a very decisive phase of statewide mass agitations. The refusal of the governor and the president rules administrators, particularly the DGP, Chief Secretary and the security advisor of the states to acknowledge and apologize for the deep insult to the state's identity confirms their disconnect from the ground reality and their disdain from the sentiments of the people. BJP MLA Kanwar Lal Meena ge Friday din de Rajasthan Legislative Assembly bra disqualify kuri dia piche Saturday de Congress leader Govind Singh Dotasra pra kuise state government pra jani gina itu delay kuriya bra kanun aro constitution ge violate kuri dis. BJP bra double engine sarkar tha kya koy kintu takhan lode double engine nai তাই কৈছে বিজেপি পৰা রাহুল গান্ধীকে লোকসভা পৰা 24 আৱাৰ্স তে ডিসকোয়ালিফাই কৰি কিনা তাইকে ঘোৰ খালি কৰিবলৈ দিলে কি কাৰণে ৰাজস্থান স্পিকাৰ ইমান টাইম লৈছে এনেকা একশন লবলৈ নিমদে জনাই দিও বিজেপি এমএলএ কনৱাৰ লাল মিনা কুন বাৰন ডিস্ট্ৰিক্ট লা আনতা কনস্টিটুয়েন্সি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে তাই পৰা 2005 লাগা सरपंच ইলেকশন দে পিস্তল লৈ কিনা সাব ডিভিজনাল অফিসাৰ কে ধমকি দিছে আৰু কোৰ্ট পৰা তাইকে 3 সাল জেল দে দালিবলৈ ভাৰ্ডিক্ট দিছে তাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপিল কৰিছে হুইল বি কোৰ্ট পৰা মানা কৰি দিয়া নিমদে मनोहर थाना कोर्ट से सरेंडर करी दी से वो तो लेना ही था, लेकिन जो 25 दिन की देरी की वो जानबूझ के की गई और संविधान का और कानून का उल्लंघन किया गया उनके द्वारा। उससे मैसेज खराब गया। ये जो कहने को कहते हैं ना कि हम डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें नहीं है, डबल स्टैंडर्ड की सरकारें हैं जो अपने लिए कानून दूसरा चाहती हैं, प्रतिपक्ष के लिए दूसरा कानून चाहती हैं। मैं समझता हूं कि जब राहुल गांधी को 24 घंटे में ये खारिज कर सकते हैं उनकी सदस्यता लोकसभा से और मकान भी खाली करा सकते हैं, तो माननीय स्पीकर महोदय को इतना देरी लगाने का कोई कारण समझ में नहीं आता। वो कह रहे हैं एजी से राय ले रहे हैं। मैं समझता हूं पहली बात तो इसमें एजी की राय की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात है अगर एजी से भी राय ली तो ऐसे संवेदनशील मामले में एजी भी 1 दिन में 2 दिन में राय दे देता है। अगर तुम्हारा एजी 25 दिन में राय नहीं दे रहा है तो उस सरकार का क्या भला करेगा, सरकार की माननीय न्यायालय में क्या पैरवी करेगा, ये भी आपके लिए सोचनीय प्रश्न। याजन आयर ऑनररी अवार्ड एंड AKTM एक्सीलेंसी अवार्ड लगा 6th एडिशन प्रोग्राम दो May 24th लोंगपा विलेज मोकचुंग दे थकिसे कुंदो आसित कोंग कॉन्फ्रेंस और आसित कोंग स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस लोगों मिली ना ऑर्गेनाइज कुरास स्टेट ते आसित कोंग रेंज ला स्टूडेंट्स कुन खान ब्रा HSLC और HSSLC भाल ब्रा पास हुई से ताखान के ऑनर कुरबो कारणे स्टूडेंट्स एक्सीलेंसी अवार्ड प्रोग्राम दो रखिसे इस साल दुईटा स्टूडेंट्स ब्रा याजन आयर ऑनररी अवार्ड और AKTM एक्सीलेंसी अवार्ड तो पाइसे ताते ताई दुईजुन ब्रा ₹20,000 ईच पाइसे और आसित कोंग स्टूडेंट्स एक्सीलेंसी ला स्टूडेंट्स ब्रा ₹10,000 लो सर्टिफिकेट पाइसे प्रोग्राम दे मोकचुंग इलेक्ट्रिकल SDO आचंगर टी आयर बा कोथा कोरिया हुमोई स्टूडेंट्स खान के क्लियर विजन और डिटर्मिनेशन बा पुरी बोले काने एनकरेज करिसे asmumda pedang sedem premium kakat sedem asar lukuin daga ralier atakani dia sozi kungi samam premium salbagana. First of all, congratulations to the students who have passed your exam with flying colors. I wish you all the best. Ni tane chimi zubaya ta jung shiu da ji ni kakat chira pra lokur dam chimi ze tane ya ni asunu kagat chiku na galia
ni asunong ba din no goals and objectives no nak chidong bijile asunong ingi toppers maya le umar lizako saga ni achang shaw ba no ni ang ba no toppers maya yes no ba no ma saga achak budang tajung ba ma ko achak limang nong ay ga raksa ba umar ko ni dahil sunong jin no ji toppers sa ko saga liu ngau dang no limang nong tadi dang nong zok sunzok na 이빠지 강나이 보는 아som 상을아 아som 상을아 개표를 해서 아야 당 열고 아설당 안도 또버스 바야 도 다독스 바야 당 아 두벌드마 꾸이는 알려 누누 takkam지 따디는 뭐 무즈기 부다설 누누 에임스 누 찌누 늑주동 기지 아동 뭐 동아 아서노가 IS officer 아야 doctor officers 아야 도 engineers officers 아야 당 요거 누누 바 따로스 이발이 방문지 짜짜짜 뭐 짜짜짜 바지 오늘 이임 날려 다는 넉치동 베지 넉도버 somewhere exam tatung di mo pass sa result sa 넉치동 Germany 넉치동 jim ni Germany aso nok misong ay ga 넉치동 bilirang school college sa house no patemer no ga amo ko item tiaje da temim si tia kon sa odi 넉치동 mali oda school ya war masarong la college sa war masarong la item ti da 넉치동 ka mali team la mali ko ta ro da cha mas Then no 넉치동 jilner mali. Then sir 넉치동 ji first ayos la no. Kiji sir sa 넉치동 ayos. Raising and accelerating MSME performance scheme laka annade financial literacy de capacity building program to thakise town halls unubotade. Idala initiative to Northeast Private Limited educational or entrepreneurial development in Nagaland India pra loigina organize kuras. Program de Zunubuto EAC El Chinglem Konyakra welcome address dia humoi local business owners, entrepreneurs or SME stakeholders khange dikhigina bishi khushi janais. Project associate Lovinochumi ba RAM scheme laga upor de kotha kuri dise aro itula training program de aigina thakya manu khange basic financial principles budgeting business aro alak jankari khan janai dibule karne thakise. He Dimapur na ko dito la yatra big programs ko sa technology clinic ko kisina attending no traditional method of kupine doing business more traditional method of earning le tipo atla azu how kisina tipo technology ona ite kum sa na technology world no again May 23rd te dunia laga jaga alak te AFC's Grassroots Football Day 2025 mana nishna Kohima IG Stadium de bhi All India Football Federation under the Nagaland Football Association probably celebrate kuris. Football for the goals laga theme under de. Itala din de Kohima District Football Association la officials can be join kuris. AFC's Grassroots Football Day 2025 manai thakya humoi AIFF pra climate change or sustainable development te focus kurigina NFA pra say no to single use plastic and our football ground our responsibility la initiative to luis program de NFA joint secretary Chenon Lo watch pra chair kuri dise aro football laga role aro theme laga upor de kotha kuri dise NFA president Nibu Sekoze aro KDFA VP Nidil Huto Sechupra Bacha Khan ge pledge taking kane lead kuri dise Grassroots Day mana laga din ma kurbo kane NFA treasurer or AFC B coach Roko Angami bra young footballers khan ge duita special training sessions dise itula program de 60 bra bishi bacha khan para participate kurse koina jani paise Union Minister Jayant Singh Chaudhary bra Saturday the Northeast education or skill development aage jai thakya praise kurise rising Northeast investors summit te tai kuise Mizoram de literacy rate to 90% laga upor huise aru itu milestone do national educational reforms or grassroots te kaam kuriya laga success dikhi paise cannot be static or function in a vacuum. I believe the conceptualization of employability as a standard or as an index must also be in constant state of flux. In our skill ministry exercises, we are also debating with our ITI reform, with our PMKVY, with the new skill policy which is still being debated and worked out, to give a massive thrust on developing a national index for employability. Of course, it will have to go across various sectors. It will have to incorporate industry standards because what here sitting in an institution like this
In a university, we might think this child or graduate is employable. Out of a ITI principal might give him the CTS certificate and say, now you are worthy of a job. It is up to the industry who really wants to hire them to assess. And this is a familiar complaint from members and huge industrial bodies, associations and corporates in India, that they find that the end product, what we are creating in these cocoons maybe, is not up to the standard that they expect. So I think this is by creating the data sets, by creating an index, by measuring, by constantly reiterating, by communicating to our ecosystem that this is what industry considers employable in this trade, and how that the index will change over time. The dynamic index will have a huge impact on making sure that no young person of Mizoram, of the Northeast and of the country gets left. में काफ़ी सुधार किया है नॉर्थ ईस्ट ने। अभी मिजोरम ने 2 दिन पहले घोषित किया, वो पहला राज्य है जो फुली लिटरेट उन्होंने किया। 98% से ज़्यादा उनको रिकग्नाइज किया गया है कि लिटरेसी लेवल है, और ये एक सीधा इम्पैक्ट पड़ा है कि जो फ्लुएंसी एंड न्यूमरेसी के प्रयास हैं फाउंडेशनल लेवल पे, और जो निपुण भारत का जो प्रयास है वो सफल हुआ। साथ ही एनईपी में भी क्षेत्रीय भाषाओं को, मातृभाषाओं को जो वरीयता दी गई, ये सीधा प्रमाण है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो इसलिए सुधरे हैं क्योंकि उनकी मातृभाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अब कौशल विकास में भी हमारी काफ़ी संस्थाएं हैं, पूरा जाल है, और हमें मैंडेट भी है कि हम नॉर्थ ईस्ट से जब कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आता है उसको हम पूरा सपोर्ट दें। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो हमारे मंत्रालय के अंतर्गत है, अभी हमने स्टाइपेंड सपोर्ट डबल किया है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो ये एक उदाहरण है। अभी ITI स्कीम भी अपग्रेड होगी 60,000 करोड़ की। पंजाब ते साइबर फ्रॉड केस अंडर मोहाली पुलिस प्रा 7 फॉरेन नाशनल्स के अरेस्ट करिसे कुन खान बा सोशल मीडिया दे मानु खान लोगो भाल प्रा कोथा करिगिना पैसा लोआ जानी बस। मोहाली ला सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरमनदीप सिंह हंस प्रा जनाइसे कि अक्यूज खान दो घाना देश ला से कुंदो नाइजीरिया दे गैंग थकीगिना काम दो करे। पुलिस प्रा ₹15 करोड़ सीज करिसे इतुला केस थे। ये लोग जो हैं एक गैंग ऑपरेट कर रहा था जो एक्चुअली लोगों से सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप करता है। जब उनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है तो एक कंफर्ट लेवल बन जाता था उनका, तो दे विल से कि जी हमने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट की वो फोटो भेजते थे, साथ में हमें 1-2 ऐसी फोटोग्राफ्स मिली हैं जिसमें $US नीचे रखे गए हैं कि ये मैंने भेजे हैं। तो उसके बाद इनको जो है ये बात करते थे कि हमारा जो गिफ्ट भेजा था वो कस्टम्स ने या कहीं किसी ने पकड़ लिया है, एंड उसके लिए मैं इम्पॉसिबल मेरे लिए कि मैं इनको पेमेंट कुछ करूं क्योंकि मैं बाहर हूं, तो आप इनको इतनी पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत मिनिमम अमाउंट कई बार ये डिमांड करते थे। उससे क्या था, वो बंदा जो बैंक अकाउंट ये लोग देते थे वो इन्हीं का होता था, और वो व्यक्ति जब उसमें पैसे ट्रांसफर कर देता था तो वहां से इन लोगों का फ्रॉड शुरू हो जाता था, और उसमें ये लोग पैसे लेते थे और उसके बाद उनसे ब्लॉक कर देते थे। इस तरह से ऑपरेट करते करते काफ़ी जगह पे हमें इंडिया में भी विक्टिम्स मिले हैं। कुछ जो हमारी अभी तक की तफ्तीश है उसमें ये भी आया है कि बाहर से भी लोगों के साथ ये फ्रॉड किया गया, फॉरेन नेशनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये लोग हमारे जो अभी पकड़े गए हैं 7 लोग हैं, अफ्रीकन्स हैं, जिसमें घाना और नाइजीरिया के सिटीजन्स हैं, और इनका एक पैरेलल गैंग जो इनका है वो ऑपरेट कर रहा है नाइजीरिया में बैठ के। तो दोनों जगह से ये साइबर फ्रॉड हो रहा था। तो हमने जो है 79 के करीब इनके पास से स्मार्टफोन्स, एप्पल के लैपटॉप्स 4 जो हैं वो मिले हैं हमें, उसके अलावा सिम कार्ड्स मिले हैं, और 31 के करीब हमारे पास बैंक अकाउंट्स जो हैं आए हैं अभी तक जितना हमने स्कैन किया है। उनकी ट्रांजैक्शंस जो देखी गई हैं 15 करोड़ के आसपास उनकी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें। तो अभी हम लोग और इसमें इनका रिमांड हमने ले लिया है, और जो इनका टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जैसे मोबाइल फोन्स में बैंक अकाउंट्स हैं उनको लिंक अप करके हम चेक कर रहे हैं कि और कितने इसमें बैंक अकाउंट्स या पैसे हमारे पास निकलेंगे। सर किसी इंडियन नेशनल की इन्वॉल्वमेंट के साथ सामने नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन जहां पे ये लोग ऑपरेट कर रहे थे उनका हम चेक कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये था कि उन्होंने कोठी किराए पे ली थी रहने के लिए, एंड वहां ये लोग एक छोटा सा ऊपर सेटअप करके ऑपरेट करते थे। तो अगर किसी की हम लोग वही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी जो लीगल एक्शन बनता होगा वो लिया जाएगा। सर कोई पब्लिक को मैसेज यही है कि देखिए बार बार यही होता है कि लोग इजी मनी के चक्कर में या अपनी ऐसी फ्रेंडशिप कंफर्टेबल करने के चक्कर में पेमेंट्स करते हैं। हनी ट्रैपिंग का भी हमारे पास पहले इंसिडेंट आया था, तो उससे अलर्ट रहें। कोई भी, देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई भी जो होता है कोई ऐसे इजी मनी नहीं है, कोई आपको फ्री में पैसे नहीं देके जाएगा, सबको अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब भी आप इस साइबर ट्रैप में फंसेंगे वो अपनी लालच की वजह से फंसेंगे, तो उसको ना करते हुए आप सिंपली अपना काम कीजिए। हमने बार बार अलर्ट मैसेजेस हमारी तरफ से सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू हमने पोस्टर, स्टैंडीज, रेडियोस के ऊपर अनाउंसमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अवेयर रहें और इससे
BJP MP Phangnon Konyak Kun Nagaland Bra ase tai Bahrain Punchi se all party delegation khan logode kundu BJP MP Baijan Panda Bra lead kurias. To delegation de former Foreign Secretary Harshvardhan Shringla, IMIM MP Asaduddin Owaisi, Rajya Sabha MP Rekha Sharma, BJP MP Baijan Panda, former JNK CM Ghulam Nabi Azad, Rajya Sabha MP Satnam Singh Sandhwaru, BJP MP Nishkan Dubey BS. Takan Bahrain logode West Asia la jaga kunba Saudi Arabia, Kuwait और अल्जीरिया दे भी जबले से इंडिया बरा टेररिज्म लोगो दे लड़ाई कुरी थका जानकारी दुबले निमित्ते तो डेलीगेशन निशना आरो अलग छोइता डेलीगेशंस भी ऐसे कुन खान कंट्री अलग अलग ते जाए से और टीम खान गे पार्टी अलग अलग ला एमपी खान बरा लीड कुरियस पांचता नॉन बैकवर्ड ट्राइब्स आवंगामी लोथा रेंग मारो सुमिदो निजोर निजोर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दे फेज वाइज एजिटेशन कुरीगिना जाबो कुसे गवर्नमेंट बरा ताखान लगा डिमांड कुरी दिया नाय कुइले Pasta Tribes Committee on Review of Reservation Policy bra state government ke backward tribes la job reservation policy do hatai dibule demand kurise noy libi bacha unreserved quota do pasta tribes ke exclusively reserved dibule lage koi kina 26 April 2025 te chief minister de 30 days ultimatum dis kintu itia tak government pra jawab diya nai kuise IB details abo reporter dona logde Hornbill TV itia CPO hall chumukidi mate aigna se aro muan aji jani paise ki pansta non backward tribe au angami lota sumi aro rengma ho yate aigna aji tan ekta meeting loya se muan jani paise ki 26 April 2025 te chief minister of Nagaland ke tan itu 30 days ultimatum itu reservation policy review kuribo nimite tagan itu ultimatum digna ahatu ahibule Monday 26 May te tu ta la ultimatum to expired hoye jabo kintu itia tak bi state government la side phale pra iku positive response na ha nimite aji takan meeting loya ase mohan jani pai ase ki itu aji meeting loa tu hoile tu ultimatum itu expired kotom hoise gole itu next course of action noile bi ki step lobo laga oporte aji takan itu meeting loya ase meeting kotom hoa pichite aji ki discussion kurigina ki resolution banaina ase itu man itia takan laga committee logo man itia sailobo 5 tribes actually we are aggrieved 5 tribes who are not enjoying the reservation policy Ao, Sima, Lotha, Angami and Rengma. So we have constituted a committee 5 tribes committee on review of reservation policy. Then we have formed this committee on 24th August 2023. Then we had several meetings and we have submitted our representation to the government on 20th September 2023. However, government has not responded to our representation. So we have served an ultimatum to the government on 26 April 2024, which is going to be expired on 26 May, coming Monday. That's why we have convened again one more meeting, consultative meeting of all the 5 tribes hosts, including these youth organizations and the student bodies. So we have decided today that since government is not officially responding to our memorandum or ultimatum, we have decided to go for peaceful protest in a fast manner. That's the decision of today's meeting. The rest, our secretary may brief you in detail. Thank you, media friends. Today was our third joint meeting with the apex tribes. Reservation policy in Nagaland started in 1977, where it was supposed to be for a period of 10 years. When in 87, the government didn't renew for 10 years, but in 89, they gave an order stating that the reservation will continue until further orders, and has continued till today, that is 48 years. Golden Jubilee due in another 2 years' time. In the past, our student bodies have submitted countless memorandums to the government, especially on the issue of internal reservation, then the duration of the reservation, multiple benefits, creamy layer, and so on. But the government, for the reasons best known to them, has kept dilly-dallying on the issue and has not addressed the issue so far. As stated earlier, we had submitted a memorandum to the Honorable Chief Minister on 20th September 2024 last year,
7 months, no action, no reply from the government. That's why again on 26 April we have submitted a 30 days ultimatum to the government, which is expiring this coming Monday. So today the joint meeting has decided that if there is no action from the government within the 30 days, we have decided to go for a phase-wise agitation to ensure that our demands are met. This is the decision of today, and once we start our agitations, if the government does not respond to us, we'll let you know in the due course of time. That's all for now. What are your demands? Demands for us are, you must have seen the ultimate memorandum as well as ultimatum. That is, if the government is not sincere enough, then scrap the reservation policy, or the balance unreserved quota be given to the 5 tribes. That has 2 core demands. So, sir, you are demanding reserve quotas for the 5 tribes. Yes. So, how should the government give the reservation to the 5 tribes? In what way? Can you kindly elaborate? That's up to the government. And as for today, we'll not reveal much because let the government also come up with its own policy, and from there we'll see how it can benefit us. We are not against any tribe enjoying reservation, but then it is time for review. It has gone for 48 years without any review. It has gone indefinitely, so it's time for the government to take notice. Now, sir, 5 tribe and government will respond to an ultimatum serve for the take time to phase-wise agitation job. So phase-wise agitation, first phase to Kiniga type to Goliath. So how it's supposed to Yes, phase-wise agitation firstly will be, the 5 tribes will be having a peaceful protest march in the respective district headquarters. That will be our first phase of agitation. And then in the second phase, maybe I may not reveal all, but then I will also like to inform that we will have a peaceful dharna at the secretariat. There will be no, nothing as such of, rowdyism or whatever. It will be a peaceful dharna at the secretariat. And later on, we'll let you know. See, the voices from the government is contradictory. Just recently, 14th May, the Honorable Minister for Power and also the spokesman for the government has said that there will be no review of reservation until the decennial census is carried out. Now, you all know that the census is due since 2021, and we don't know when it is going to be held. Now, we just cannot wait for that census to happen. तो itu taka sei tela bulletin kane aro alag alag khobor kane sai thakbi Hornbill TV. Goodbye.